Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Part Bhavan. In today's class, I have came up with a handwritten mind map for class 7, Nutrition in Plants. In our previous class, we have already discussed about this topic in detail, but in this class, we will be discussing about the mind map. This will be very helpful for your last minute revision, so stay tuned. For the first thing, we have to know that what is nutrition. Now, nutrition is a process where organisms take food and utilize it. Okay, when an organism taking that particular food and then utilize it is known as nutrition. Now, there are three modes of nutrition, that is autotrophic, heterotrophic, and the special mode. What is autotrophic? Autotrophic, auto means self and trophic means nourishment. The organisms that can prepare their own food is known as autotrophic nutrition. Okay, there are green plants, blue-green algae, those are autotrophs because they can prepare their own food. Now, green plants prepare their food by the process of photosynthesis. Photo means light, synthesis means production या फिर form something. Okay, now photosynthesis मतलब जब प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करता है उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर 4 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. व्हाट आर दे? नंबर 1 इज वाटर. वाटर coming from the soil and just goes upwards through the xylem vessels and then goes to the leaves. Why leaves? Because inside the leaves the whole process of photosynthesis occurs. Okay, now the second one is the sunlight. Sunlight coming from the sun, obviously. Now the third raw material is the chloroplast. Now what is chloroplast? Chloroplast is a green colored pigment that is present inside the leaf and it helps to traps the sunlight and helps in the photosynthesis. Okay, and lastly carbon dioxide. Now from the air the carbon dioxide goes to the leaves through stomata. Now what is stomata? This is the structure of stomata. What is stomata? Stomata is a tiny pores which enclosed by guard cells. Stomata especially present on the lower surface of the leaves. Okay, and वो एक टाइनी पोर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल. अब गार्ड सेल क्या होता है? दिस इज द गार्ड सेल. दिस इज द गार्ड सेल. गार्ड सेल, whenever the guard cell closed, carbon dioxide does not goes inside the leaves because stomata will be also closed. Okay, so during the daytime guard cell always open because they require carbon dioxide and the carbon dioxide goes from the air through the stomata and goes into the leaves, right? Now this stomata also helps in transportation. Okay, helps in transportation. Transportation of what? Transportation of gases. Okay, so the carbon dioxide from the air goes inside and by the process of photosynthesis a byproduct is produced which is called oxygen. It is also released out from the plant through this stomata. So this is also helps in transportation and this is also help in transpiration. Transpiration, what is transpiration? Now when the plants take lots of water, the excess water goes outside as in the form of water vapor. Okay, this is also known as evaporation. So this is called transpiration. This transpiration process is also occurs through this stomata. Okay, now all the 4 raw materials just reached the leaves and then by the process of photosynthesis they produce glucose and oxygen as the byproduct and some amount of water is also released. So the glucose, this is the glucose that produced on the leaves and then this is stored inside the plants as in the form of starch, right? This is the entire process of photosynthesis. Now in case of heterotrophic
nutrition. What is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is a type of nutrition where organisms cannot prepare their own food and dependent on others. So there are lots of animals are heterotrophs, including humans also, and there are also some kind of plants there which they cannot prepare their own food. So now these heterotrophic nutrition are of three types. Number one is parasitic, number two is saprophytic, and number three is symbiosis. Okay, now एक एक करके आते हैं. सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जहाँ पे प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड. कैसे? व्हेन अ प्लांट क्लाइंब अप ऑन अनदर प्लांट दे फीड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट. ओके, जैसे कि कसकटा एक प्लांट है जो हॉस्टेरिया बोल के एक प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, क्लाइंब करता है एंड उसी से न्यूट्रिशन अपटेक करता है. तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सेकेंडली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ सैप्रोफिटिक मोड मतलब जहाँ पे प्लांट्स फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, जैसे कि मशरूम्स. नाउ ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम्स वी कैन ऑल्सो कंसिडर एज फंगी. ठीक है, ब्रेड मोल्ड या फिर मशरूम्स को हम लोग एज अ फंगी को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. नाउ lastly, that is a symbiotic association. Now symbiotic association or symbiosis are the same thing. This is a kind of association where both the organisms get benefited by actually helping out each other. But how? Actually rhizobium is an example of this, right? राइजोबियम एक तरह के बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है. इसका काम क्या है? ये हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू यूजेबल फॉर्म एंड देन उसको सॉइल में डाल देता है. देन उसी सॉइल से प्लांट्स उस नाइट्रोजन को अपटेक कर लेता है एंड इन रिटर्न प्लांट उसको क्या देता है? शेल्टर एंड फूड. ओके, तो इस टाइप ऑफ एसोसिएशन को हम लोग बोल सकते हैं सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होता है एंड एक दूसरे को हेल्प करता है. राइट नाउ लाइकेंस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस. नाउ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक आता है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. देयर आर सम काइंड ऑफ प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स. ओके, now what kind of plants? They are called insectivorous plant. They grow on nitrogen deficient soil. That's why they require lots of nitrogen. And where they get that nitrogen? They get that nitrogen from that insects. Okay, now there are lots of examples like pitcher plant, Venus flytrap, but in your NCERT syllabus pitcher plant को थोड़ा elaborate करके लिखा गया है. जैसे कि pitcher plant के जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा जग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ व्हेन इन केस ऑफ pitcher plant leaf is modified into a pitcher or a jug, whenever an insect lands on that jug, the upper portion of that jug closed, which is called apex. Okay, apex लीफ के ऊपर या फिर जग के ऊपर जो एपेक्स रहता है वो एक लीड की तरह रहता है एंड जब भी इंसेक्ट उस पिक्चर के अंदर चला जाता है तब ये एपेक्स क्लोज हो जाता है. ओके, एंड इनसाइड दिस पिक्चर देयर आर लॉट्स ऑफ हेयर. ओके, दैट हेयर tangled up that insect and secrete digestive juices to digest that particular insect to derive nitrogen. Okay, this is so easy. Now you have to know another thing, another factor, that is important nutrients for plants. There are lots of important nutrients जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन. उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन हम लोग प्लांट्स ग्लूकोज से ले लेता है. फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसी से ये लोग ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ले लेता है. बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन उसके सोर्सेज अलग अलग होता है. जैसे कि
फार्मर्स जब हमारे सॉइल में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करता है तब ये लोग उसी से नाइट्रोजन को ले लेता है। ये गया एक। एंड सेकेंडली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया that is present on the leguminous plants root nodules, and they just take that atmospheric nitrogen and convert it into the usable form, and then the plants get that nitrogen. Okay, that's it for today's videos, guys. If you feel that helpful or if you like this video, please